डॉक्टर साहब nowadays I see बहुत लड़के जो जिम स्टार्ट कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। इससे ज़्यादा आप अपने शरीर को नुकसान नहीं दे सकते। Hi, I'm Charanpreet Bagga and welcome to the Indie Talk Show. We have Dr. Garg over here in our first episode. Dr. Garg is a known orthopedic surgeon and also the owner of the Health City Hospital in Lucknow. Doctor, welcome to the Indie Talk Show. Thank you, sir. It's our first episode and we are very thrilled and excited to have you over. Yeah, I'm thrilled and excited to be here. Doctor, we'll start with the first round of questions. Yeah, sure. How do you think is bone care different from general body care? Well, actually, it's not really too much different. बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस ये हो जाते हैं एज एंड जेंडर को से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ चाइल्ड तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो विटामिन डी सप्लीमेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है तो फिर कैल्शियम, विटामिन डी प्लस प्रोटीन, ये तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और हर एज ग्रुप में एक्सरसाइज ऑफ कोर्स एंड दैट टू वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है ऐसा because when Sukham was pregnant with Rizak, my first child, she faced a lot of issues. Post Rizak was born, she faced vitamin D3 की कमी हो गई, उसको कैल्शियम की कमी हो गई। There is a reason for that. And as long as the lady is pregnant, she is under the care of a gynecologist. But the moment the delivery happens, then the child goes under the pediatrician. The lady is not under anybody. So increased calcium, vitamin D during lactation is very important. So most of the times ladies take care during pregnancy, but they don't take care after pregnancy. पुराने ज़माने में जो लेडी अपने बेबी को मिल्क पिलाती थी, उसको दिन भर में 8 ग्लास दूध पिलाया जाता था। आज की तारीख में I don't think any lady would ever have even a single glass of milk. So that is one of the reasons why most of the ladies who are lactating, they face a lot of problems. Fair enough. Doctor, for a layman, for our viewers of this podcast, आप क्या basic diet या supplement recommend करोगे? Some supplement which they can get over the counter. देखिए, natural food is the best supplement. Artificial supplements या over the counter supplements की requirement उनको ज़्यादा है जो number one, people who are into bodybuilding and need more proteins than which you can normally assimilate from your regular diet. और पीपल हु आर बेटर। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना अच्छा खा पी रहे हैं और आपकी बैलेंस डाइट है तो आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपकी डाइट में एसेंशियली होनी चाहिए एंड दैट इज़ मिल्क। और एक मिल्क के साथ भी प्रॉब्लम है। मिल्क जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है, बट विटामिन डी इज़ अ हीट लबाइल विटामिन। कहने का मतलब ये कि जैसे ही गर्म करते हैं हम दूध को, विटामिन डी उसमें से ख़त्म हो जाता है। नाउ व्हाट हैपन्स, अगर आप फ्रेश मिल्क ले रहे हैं ग्वाले से तो उसको आपको बॉयल करना ज़रूरी है, तभी वो स्टेरलाइज होता है। लेकिन आज की तारीख में मोस्ट ऑफ अस आर बाइंग पैस्चराइज्ड मिल्क फ्रॉम द मार्केट। पैस्चराइज्ड मिल्क ऑलरेडी बॉइल्ड है एंड देन कूल्ड है, तो उसको आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिकॉज इट इज़ बॉइल्ड अप टू 100 डिग्रीज, उसका विटामिन डी खत्म हो जाता है। बट गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि विटामिन ए और विटामिन डी उसमें डाला जाता है अलग से। दे आर all pasteurized milks are fortified with vitamin A and D because these are the two heat labile vitamins. Unfortunately होता क्या है, जब वो पैकेट वाला मिल्क हमारे घर में आता है, हमारे यहाँ लेडीज सब काट काट के भगोने में भरती हैं और उसको उबाल देती हैं और सिंपल रीज़न कहती हैं मलाई नहीं उतरेगी। बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि उससे आप वो जो विटामिन डी उसमें सप्लीमेंट किया गया, फोर्टिफाई किया गया, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप पैस्चराइज्ड मिल्क ले रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको उतना ही गर्म करिए जितना आपका ड्रिंकेबल टेम्परेचर बन जाए। डोंट बॉइल इट, इट डजंट नीड टू बी बॉइल्ड। फेयर इनफ। डॉक्टर साहब, एक मिथ आजकल है कि मिल्क इज हार्मफुल इन द सेंस आई नो अ लॉट ऑफ डाइटिशियंस हु से स्टॉप टेकिंग मिल्क। आई एम अ बिग फैन ऑफ इफ आई डोंट हैव माय मॉर्निंग कोल्ड कॉफी आई कांट मूव आउट ऑफ द हाउस। मगर मैं पर्सनली अब मैंने बंद कर दिया और मुझे लगा है कि उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं बॉडी में। देखिए, आजकल का ज़माना मिलावट का है, तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Milk per se is not harmful, but what is happening nowadays that what we are feeding our cows or buffaloes, that is what is important. And commercialization के चलते to extract more gain out of the cow, the
pharmas are giving injections. So those injections are harmful. Eventually तो वो आपकी body में ही जाएगा. If you are able to get pure milk, then there is no better supplement than that. And how do you think we can get pure milk? अपनी गाय पाल लें. I'll wait for Charanpreet to open a farm. मैं प्लान कर रहा था अपनी गाय पालने के लिए. Until Sukham said no, you can't do it. Also, lately I've been taking collagen. What role does collagen have to play in one? So collagen is a very important part of the body structure, and there are two types of collagens. Type 1 collagen is found in tendons and bones. So, for example, people getting periarthritis shoulder or tendinitis, so they need type 1 supplements, and which are easily available now in the market. Then there is a type 2 collagen which is present in cartilage. So people getting knee joint pain or any joint pain and the weight bearing joints, which is because of damage to the cartilage. They need this type 2 collagen, and that is also now available in the market. So these supplements help maintain the integrity of your joints as well as your tendons. Just a very personal question, Dr. Sam. कुछ कोलाजन ऐसे हैं जैसे ग्लूकापिस है, ग्लूटापिस लेके पानी, उसमें डॉक्टर्स, some doctors, I will not name them, have started prescribing them for cleansing of your liver. Is that so? Actually, see, medical science has two kind of, one is anecdotal evidence and the other is scientific evidence. So anecdotal evidence is purely on one's own experience and it has no scientific lookup. Unless we have a proper research and we have a peer-reviewed research, we can't really say what is right, what is wrong. So as of right now, no research is available which says that this is good for the liver. So collagen basically you think is for your bones and your Bones, skin. tendons and skin Anti-aging. and cartilage. That's Fair enough. But sir, what do stress and anxiety, do they have any connection with bone pain? Oh yes, definitely. See, stress manifests itself in many forms, and backache is one of the commonest reasons, one of the commonest ways that the stress manifests in a human being. In ladies and men both. Neck pain, upper back pain, lower back pain. This is one of the commonest manifestations of stress. Now, as a doctor, it becomes at times very difficult for me to assess whether the patient who's coming to me with backache, is it purely stress related, or it is partially stress related, or it has some organic element to it. So with the help of certain investigations, we are able to find out. And if we keep on treating these patients with only medicines or exercises and we do not take away the stress part, they don't respond. So the managing stress is equally important. So how I can connect the dots was, I was just talking to one of my staff members the other day, and I was telling her कि stress से मुझे लग रहा है कि मेरी cervical का pain छिड़ जाता है. Absolutely, it's part. You see, whatever you feel in your body, whether it is pleasure or it is pain, it's all through the mind. So if your mind is not at rest, and if it is not at peace, then your perception to pain is also going to increase. The same pain which you might just ignore otherwise, if you are stressed out, you will not ignore. That pain will keep nagging. We basically need to get rid of the stress in our life. Absolutely. तो पोस्ट ऑफिस जो हम घर जाते हैं वो वाला स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं? I'm sure we all sail in the same boat. I wish I could answer that, and if you are able to get an answer to that, please tell me. I wish. Doctor, what can less active people do at home for strong bones? Beg your pardon. There is absolutely no solution. Less active people have to get more active, because the bone will never become strong if it is not loaded. So you need to load the bone. This is human physiology. आपकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो हड्डियों को सिग्नल ही नहीं मिलेगा मजबूत होने का जब तक उन पर लोडिंग नहीं होगी. एंड द परफेक्ट एग्जाम्पल इज बेडरिडन पेशेंट. जैसे किसी को स्ट्रोक हो गया, उनकी हड्डियां आप कुछ भी कर लीजिए कमजोर होती चली जाती हैं. योर बोन्स नीड टू बी लोडेड. सो लेस एक्टिव पीपल नीड टू गेट मोर एक्टिव. Any effects after COVID you feel लोगों में आए post vaccine or the booster? Actually, there is no scientific evidence to support any problems associated with the vaccine. But what happened during COVID, most of the people who had very severe disease, they were put on very high doses of steroids. Yes, steroids. So cortisones have had a bad effect on the body. They've always had a bad effect. So, but when the doctor prescribes it to you,
he has to strike a balance. They are life-saving, but then they have their side effects. So it has to be a fair balance. But those patients who received high doses of steroids during COVID, they have a high chance of getting a condition called avascular necrosis of the hip. इसमें होता क्या है कि हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. ऊपर सॉकेट यानी कटोरी है और नीचे बॉल है जिसके अंदर वो सॉकेट के अंदर हिप जॉइंट चलता है. तो जो बॉल है, इवन दैट हैज इट्स ओन ब्लड सर्कुलेशन. तो स्टेरॉइड्स की वजह से जो ये एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है, उसमें वो बॉल का ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, जिसके चलते वो सॉफ्ट हो जाती है, और जब पेशेंट उसमें चलता रहता है तो धीरे धीरे वो डैमेज हो जाती है. तो अगर इसी चीज़ को हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं तो हम उसके जॉइंट को बचा सकते हैं. लेकिन अगर वो पेशेंट नेग्लेक्ट करता है और इवेंचुअली वो जॉइंट पूरी तरह डैमेज हो जाता है, देन जॉइंट रिप्लेसमेंट इज द ओनली आंसर. What future challenges do you see in orthopedic care? I see in my day-to-day practice, the biggest challenge which I see is obesity. Obesity. It's a major challenge, and unfortunately, it used to be an urban problem, and nowadays I see it's becoming more and more rural problem also. It used to be an adult problem, and nowadays I see more and more in children also. So obesity is one of the major factors which is affecting the health of individuals. And it is not only the bones, the joints. You can very well imagine, God has made joints to, bear 60 kgs weight. They are now bearing 120 kgs. So how will they withstand? So obesity is one of the major challenges. The second commonest challenge which I see and I foresee for the future is women don't understand that how important menopause is. And as of right now, our maximum number of patients are postmenopausal women. Because of calcium deficiency, they develop osteoporosis, and this osteoporosis is because of after menopause there is stopping of the hormone, and the hormone normally keeps your calcium level in balance. So this calcium deficiency leads to osteoporosis, and osteoporosis makes your bones fragile, and you get these fractures, what we call as fragility fractures. Dr. Since you are running 2 hospitals by the name of Health City, do you see any future advancements in the care, or how do you prepare for something like that? See, in our hospital, what we have done is we have taken 2 approaches. One is technology. We have the best of the equipments. We are very soon going to get the world's best robotic for joint replacement surgery. So that is the technology front. Then we have all the facilities there in our operation theatres and in our wards and in our ICUs. Secondly, what we have done is on the manpower front. Now orthopedics per se is now become a very big branch. So we have, apart from joint replacement surgeons, we have separate trauma surgeons, we have pediatric orthopedic surgeons, we have orthopedic oncology, that is cancer for in bones and joints, and we have geriatric orthopedics, so orthopedics specifically for old people. So when you have these sub branches, so we are trying to create a center of excellence there. Doctor, nowadays I see बहुत लड़के जो जिम स्टार्ट कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, वो स्टेरॉइड्स लेते हैं. हाउ डू यू थिंक इट इज हार्मिंग देम? इससे ज़्यादा आप अपने शरीर को नुकसान नहीं दे सकते. तो इनके स्टेरॉइड लेने से बहुत सारी चीज़ों का और भी नुकसान होता है. लोग जिम को बदनाम कर देते हैं, जबकि जिम खराब नहीं है. बट स्टेरॉइड से आपको इंस्टेंट एक वो मिलता है, पंप ग्रेटिफिकेशन, एक पंप मिलता है. आप बॉडी जो है वो ज़्यादा वो बन जाती है. और आई एम प्रीटी श्योर जितने ये कॉम्पिटिशन्स हैं इसमें लोग पार्ट लेते हैं, वो जो छोटे लेवल की कॉम्पिटिशन जहाँ पे डोपिंग नहीं टेस्ट हो पाती है, वहाँ पे सब लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं. सो विच इज़ वेरी हार्मफुल टू द बॉडी. हर किस्म से स्टेरॉइड जब आप ले रहे हैं तो नुकसान होता है, जब आप स्टेरॉइड बंद करते हैं तो नुकसान होता है. सो इट हार्म्स ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. स्टेरॉइड लेने से आपकी आंखों में कैटरेक्ट हो सकता है, आपकी किडनीज फेल कर सकते हैं, आपके जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं, वास्कुलर नेक्रोसिस जिसकी हमने बात की, आपकी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकती है. आई मीन you think of it and it is possible. So steroid is a wonder drug given in the right hands, but it is a poison given in the wrong hands. You're right. Especially I've seen these young boys, they
they get very rash when they take steroids and they get the acne issues. Or I think somehow in the reproduction system also it damages you. It definitely damages. ये बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं मुझे लगता है जो मिस्टर ओलंपिया करते हैं वो आई थिंक दोज गाइज आर अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस और प्रिस्क्रिप्शन व्हेन दे टेक स्टेरॉइड्स बट देन आप देखिए जैसे रॉनी कोलमन है ही बीन मिस्टर ओलंपिया फॉर 8 consecutive times और कितनी प्रॉब्लम है उसकी कितनी आई थिंक he's had 16 surgeries और आर्नोल्ड हैज हैड 3 bypass. Steroid in any way for anybody is not the right choice. Will harm you, no doubt. What rehab approach do you have for powerlifters? Since you know I was a powerlifter, my first slip disc happened in 2006. That is when I approached you. What approach do you So have? as far as rehab is concerned, rest is most important. I get a lot of patients and they are eager to go back to the gym. तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई ये सोचो कि किसी मैच में विराट कोहली को चोट लगती तो उसे भी 2 मैच में बैठना पड़ता ताकि तीसरे मैच में खेल सके. अगर वो चोट के साथ खेलेगा तो फिर आगे खेलना उसका परमानेंटली बंद हो जाएगा. सो यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम टू हील एंड टाइम टू हील इज ओनली बाय रेस्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रेस्ट. सेकेंड इज फिजियोथेरेपी एंड प्रॉपर मेडिकेशन. एंड बिफोर डूइंग दैट यू हैव टू असेस द एक्सटेंट ऑफ इंजरी. आपकी हड्डी टूटी, एक्सरे कराया, आपको दिख गया कि हड्डी कितनी टूटी है, कहाँ से टूटी. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो जिम में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है पावर लिफ्टर्स में, शोल्डर की, बैक की और नी की, ये 3 इंजरीज सबसे ज़्यादा कॉमन होती है. तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का असेसमेंट कोई डॉक्टर ही कर सकता है. तो उसी के हिसाब से उसका ग्रेजुएटेड रिहैबिलिटेशन होता है. सिवियर इंजरी वुड रिक्वायर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ रेस्ट, अ माइल्ड इंजरी वुड रिक्वायर अ लेसर पीरियड ऑफ रेस्ट. एंड देन व्हेन यू रिज्यूम, नंबर 1 इट शुड बी विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट एंड नंबर 2 इट शुड बी ग्रेजुएटेड. अगर आप आज 100 kgs उठा रहे हैं, आपको चोट लगी, आपने रेस्ट लिया, तो when you go back to your lifting after 3 weeks or 4 weeks, you can't start with 100 kgs. You have to go back and then gradually build it up again. Doctor, just a personal question. जब मैं करता था in 2006, 2007, I was big time into powerlifting. I also did it in Australia in 2002 and 3, and I won a competition over there. तब मैं जो वेट उठाता था और इंजरी होती थी तो इट यूज्ड टू जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ठीक हो जाती थी. अब जैसे मैं लाइट जिमिंग करता हूँ जस्ट टू मेंटेन माय फिटनेस. अब अगर कोई इंजरी हो जाती है टेक्स मी लाइक 2 weeks or 3 weeks टू रिकवर दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट. ये इसका क्या रीजन है? इज इट द एज और इट्स एब्सोल्युटली द एज. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. जब बच्चे को चोट लगती है उसकी हड्डी जो है 4 हफ्ते में जुड़ जाती है. वही हड्डी फॉर एन एडल्ट टेक्स अबाउट 14 weeks. So the process of healing goes down. Okay. The time to heal goes up much higher as you start aging. So and by aging I don't mean you become 70, 80. You start degenerating the day you stop growing. तो आपकी जो healing power 20 पे होगी वो 30 पे नहीं होगी, जो 30 पे होगी वो 40 पे नहीं होगी. So the healing power goes down. Same as lifting of weights. Definitely. Yeah. What mindset impact orthopedic injuries and what do you think? How do you think the injuries can recover? See, if you have a positive attitude, you have an injury, you'll still be positive about it. You'll think कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं एफर्ट करूँगा, पेन होगा उसको बेयर करके एक्सरसाइजेस करूँगा, I'll go for the rehab program, and then eventually you will heal much faster. But if you have a negative mindset or a closed mindset, as they say, then obviously you'll start thinking negative about everything. ये मुझे क्यों हो गया, मेरा क्या होगा, आगे मैं कुछ कर पाऊंगा, तो आधी बीमारी सोच में ही बढ़ जाती है. तो for any injury or for any rehabilitation, a positive mindset is absolutely important. And the difference is there. A person with a positive mindset will definitely recover much faster. Also for a layman, like for example, I've been gymming since I think I was in class 12, which is 97. तो मैंने छोड़ी नहीं, मतलब on and off, I'm still doing, and I don't think I'll stop gymming till I die. Yeah, you should not. Do you think at a certain point when people stop gymming, does it the muscle mass gets converted into fat? ऐसा क्या myth है कि ये सच्चाई है? No, the muscle mass doesn't get converted into fat, but then your muscle mass will keep going down. तो यहाँ पे I would like to stress on another fact. People have this myth कि जिमिंग उसको करनी है जैसे बॉडी बिल्डिंग करनी. इससे गलत कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता. आई थिंक हमको सबको
चाहे वो आदमी हो चाहे वो लेडीज हो, सबको किसी न किसी फॉर्म में वेट्स करने चाहिए, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सार्कोपीनिया, एंड एज वी एज, सार्कोपीनिया मीन्स लॉस ऑफ मसल मास। एज वी एज सबकी बॉडी से मसल मास कम होता है। अगर हम थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग, चाहे वो किसी भी फॉर्म हो, जिम जाके करें, घर पे थोड़े डंबल ले लिए उससे करें, तो आप अपने मसल मास को अगर स्ट्रांग रखते हैं तो आपके बॉडी का बैलेंस अच्छा रहता है। तो आपने सुना होगा कि 70 साल के 80 साल के माता जी हैं, या वो टॉयलेट में हल्का सा पैर मुड़ा हुआ गिर गए, बिकॉज दे लूज देयर एबिलिटी टू मेंटेन देयर बैलेंस, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मसल्स। तो मेंटेनिंग अ गुड मसल मास is not important only for bodybuilding. It's not for show. It's for your own health. And people disregard this. आज की तारीख में मसल की इंपॉर्टेंस लोग नहीं समझते हैं, और it is very important. Everybody needs to do some kind of muscle building exercise. Fair enough. In your opinion, what is the traditional bone setting practice? उसके लिए हम जिम्मेदार हैं. By हम, I mean we qualified orthopedic surgeons. बोन सेटर्स क्यों प्रेवलेंट है? क्योंकि हम वो छोटे छोटे गांव कस्बे में नहीं अवेलेबल है, हम बड़े शहर में आके सेटल कर जाते हैं। जो छोटे गांव से भी अगर पढ़ के निकलता है लड़का, वो MBBS करके MS करके ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है, वो वापस उस गांव में नहीं जाना चाहता फॉर वट एवर रीजन, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन। तो जो ये बोन सेटर्स प्रेवलेंट हुए हैं, चले हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जिन बेचारों के पास और कोई जरिया नहीं है अपने हड्डी का ट्रीटमेंट करने का। बट वट अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ शहर में भी बोन सेटर्स हैं। वो एक मिथ है, कई सारी हड्डियां अपने आप जुड़ जाती हैं, वो उस पर पत्ता बांध देते हैं, वो जुड़ जाती है, तो लोग सोचते हैं कि इन्होंने जोड़ी, लेकिन जोड़ी उन्होंने नहीं जोड़ी, तो आपकी बॉडी ने। हड्डी के डॉक्टर का काम यह है कि आपकी हड्डी को जोड़ता तो आपका शरीर ही है, लेकिन हम उसे सही पोजीशन में जोड़ते हैं, सो दैट द जॉइंट्स रिटेन देयर फंक्शन, द बोन्स रिटेन देयर एनाटॉमी, कोई डिफॉर्मिटी ना हो, पैर छोटा बड़ा ना हो। तो बोन सेटर्स से जो ट्रीटमेंट कराते हैं, हम लोग जो फेस करते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हड्डी तो जुड़ गई लेकिन अब मूवमेंट नहीं आ रहा है, या पैर में लिम्फ है, या पैर टेढ़ा हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पनपे हमें हमारी वजह से, क्योंकि हम गांव में नहीं। तो सर आपके हिसाब से व्हाट इज अ गुड बॉडी बिल्डिंग, सॉरी व्हाट इज अ गुड मसल मास इंडेक्स, व्हाट पैरामीटर्स डू यू थिंक, जैसे आपने भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे? सो यू नो, एंड एवरी फोन, नाउ एवरीबॉडी हैज अ फोन, so every phone has a BMI calculator. So आपको ये समझना चाहिए कि height is very important. For a person who is very tall, उसका bone mass index अलग होगा. For a person who is short, उसका अलग होगा. So you have to maintain a good BMI. So for tall people, they can still afford to have a higher body weight. Shorter people cannot afford to have a higher body weight. And as far as the bone mass is concerned, I mean 30% would be a dream, but then I mean anything less than 10 is of course too bad. मुझे याद है मैंने अपना किया था, लास्ट वाज इन 2019, दैट वाज इन अ जिम, द प्रॉपर BMI machine, मेरा आया था 59. So not everybody is Charanpreet. So what's one habit that everybody should adopt for lifelong bone health? Weight bearing exercise. You have to have any form of weight bearing exercise, be it walking, be it running, be it climbing stairs like you do, or cycling for that matter. But weight bearing, loading the bones is extremely important. Okay. Nothing can replace that. For our viewers on this podcast, what is one thing that you would suggest for them? I would suggest that preventive medicine is far better than treating a disease. And today in our busy times, we are all busy looking after our businesses, our offices, our work, but your body is what is very important, and don't leave it too late to take care of your body. Start thinking about your body right now, and by thinking about your body, I mean take care of your nutrition, take care of your exercise. These two things are most important as far as giving you a healthy life. Basically, you emphasize more on weight training or any form of exercise, and then your diet, your balanced diet. See, both are important. Both are equally important, I would say. Because if you are doing a lot of exercise and you are not taking care of your diet, then definitely you're not going to get the desired results.
and vice versa. Just dieting alone will perhaps keep your weight down, but it's not going to help your muscles anyway. Professor, does these days I've seen, especially in ladies, I've seen they've got this phobia of intermittent fasting or following a dietitian and 18 hours of no this and 18 hours of not that, kind of. मैंने आजकल देखा बहुत common हो गया, especially in married women. Do you think it helps? Yes, it helps. And there is absolutely nothing wrong with fasting. See, in almost every religion, fasting has been advocated. So, today we are talking about the scientific reasons behind fasting. But earlier nobody was there to explain the scientific reasons. But every religion has advocated fasting, be it Hinduism, be it Sikhism, be it Islam, or be it Christianity. So fasting in a way helps you by removing lots of things which your body doesn't desire, what is known as autophagy, because your body eats itself, and it takes care of your weight, it takes care of your insulin requirement, and helps you maintain your blood sugar levels. Also, any relation between consuming alcohol and orthopedic? Actually, excess of anything is bad, and since I consume alcohol myself, I would never tell anybody not to consume. But then moderation is what is important. If you are consuming it in excess, then of course it is bad. Moderation, it is allowed. Some of my viewers would like to know this something, the aging of like 12 years, 15 years, 18 years, जितनी आप ऊपर जाएंगे उतना better होता है वो कुछ something like that, or is it just a myth? That is a myth, of course, and it's all on your taste. But then what happens when you nuance into a certain thing, then you go into more and more refinement. But then of course everything comes at a cost. So thank you for coming over to our first episode of the Indie Talk Show, and we are extremely thrilled and excited to have the episode. I think we launch it on the 24th. Okay. So it's on a YouTube channel, the Indie Talk Show. Thank you, Charanpreet, and I wish Indie Talk Show all the best, and I'm sure it's going to become very popular.